so today's class will be talking about isoenzymes. What do you mean by isoenzyme? Wherever the term iso means similar. See? What do you mean? Structure. Similar structure. Similar structure. Same. लेकिन here the word iso doesn't stand for the same. Isoenzyme are those type of enzyme which is multiple form of enzyme, but catalyze same type of reaction. Multiple form of the enzyme, but they are going to catalyze the same type of reaction. एक एंजाइम है और ये मल्टीपल फॉर्म में है, ठीक है? One enzyme it is there, it is present in the multiple form. The differentiation of this type of enzyme can be, they can differ in the physical and chemical properties. They can differ in the physical and chemical properties, like they can have a different structure, electrophoretic pattern, and immunological properties. But they will going to have the same type of reaction. Okay? What the author wants to say over here is that isoenzymes are a category of those enzymes which may be differ in the structure. Electrophoretic pattern. Electrophoresis एक टेक्निक है जिससे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जनरली सेपरेट हो सकते हैं, ठीक है? Electrophoresis it is one type of technique through which the protein molecules is going to get separated depending on their charge. Each molecule is going to have a positive charge or a negative charge depending on their charge. For an example, if a mixture of sample you have been taken, in that you want to separate different type of proteins, especially proteins. So these electrophoresis will going to give you the clear idea regarding how much the concentration of which type of protein it is present. It is electrophoretic pattern. Now, what do you mean by the isoenzyme? The isoenzyme, it is a category of those kind of enzyme which can have the different type of structures. The structure may differ. Generally, अपन previously अब तक जब कभी भी आइसो पढ़े थे, सेम structural configuration but different in the arrangement pardons. Previously we have said that same structural formula like in glucose and fructose, they obey the same type of formula, CH2L and O6, but different in the configuration. ठीक है? Same structural formula, different in the configuration. But here in this case, the formula can be changed, structures can be changed, their physical property can be changed, electrophoresis pattern can be changed, immunological properties can be changed, but they will going to catalyze the same type of reaction. और जिधर भी structures भी change रहा, properties भी change रहा, लेकिन उन्हें same type का reaction देते हैं, same type का reaction, and they can be present in any part of your body. Some can be present in the heart, some can be present in the kidney, some can be present in the liver, but they will catalyze the same type of reaction. Those enzymes which are different in their structural, whether it is physical and chemical property, as well as they might have a different type of location. Either be present different location present, but they will catalyze same type of reaction. Those kind of enzymes will be called as isoenzymes का नाम है। इन लोग structurally different हो सकते,
पोजीशन लोकेशन उन लोगों के भी डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन ना सेम टाइप की एक्टिविटी करते हैं, सेम टाइप का रिएक्शन करते हैं, तो ऐसे एंजाइम्स को क्या बोलेंगे? क्लियर है? ठीक है ना। इन द एग्जांपल ऑफ द एंजाइम, द फर्स्ट एग्जांपल इट इज द lactate dehydrogenase, LDH, lactate dehydrogenase. Okay, lactate dehydrogenase. कहाँ देखे आप lactate dehydrogenase? Where you have seen the lactate dehydrogenase enzyme? So we'll answer Venkatesh. ఇక్కడ చూసిన lactate dehydrogenase. Lactate dehydrogenase कहाँ देखे नंदनी? You have seen enzyme? You have seen. When glucose is going to convert it, the end product will be in the form of the pyruvate. Now, if it is in the aerobic cycle, it will move to the acetyl CoA and jump into the citric acid. Citric cycle. If it is not in the aerobic, they will move and form the lactate. In the front of presence of the enzyme LDH, lactate dehydrogenase. अगर glycolysis cycle aerobic condition में भी it is going to jump into the citric acid cycle. If it is under anaerobic condition, they will form the lactate in the presence of the enzyme lactate dehydrogenase. Okay. Now, these lactate dehydrogenase is the best example of isoenzymes. Okay. Now, the lactate dehydrogenase enzyme having the 5 different types, subtypes. 5 subtypes. Now, depending on what type of thing you are saying, आपको नहीं आ रहा समझ। मैं क्या बोल रहा हूँ? lactate dehydrogenase 5 इसके अंदर सब क्लासेस है। lactate dehydrogenase 5 चीजों में डिवाइड है। ठीक है? समझ में आ रहा है? ठीक है? Lactate dehydrogenase is again going to be subclassified into 5 different types. Now, what is making them to differ? आप बोल रहे कैसा ये 5 different है? Depending on their electrophoretic pattern. Depending on their electrophoretic pattern. The electrophoretic pattern के जरिए you can divide the LDH into 5 different types. ये इलेक्ट्रोफोरेसिस एक टेक्निक है जिसके अंदर एक साइड में पॉजिटिव कैथोड रहता है, एक साइड में नेगेटिव एनोड। ठीक है? अगर आप एक कंपाउंड मिक्सचर को ले लिए, इट इज अ मिक्सचर ऑफ LDH and you have placed it in the center of the electrophoretic dish. ठीक है? Now, due to the charge particle, every particle they will have fast positive or negative charge. Depending on the charge particle, they will start moving, and there are certain times will be there. At that time, they will going to get stopped. Now, these different type of bands has been given different type of names depending on their mobility, how much fast they are moving on the electrophoresis pattern. ठीक है बात? इलेक्ट्रोफोरेसिस एक ऐसी टेक्निक है जिसकी वजह से आप LDH को 5 डिफरेंट सब टाइप्स में अपन मालूम करें। इन लोगों को 5 डिफरेंट सब टाइप्स के हैं। ठीक है? कैसा मालूम करें आप? डिपेंडिंग ऑन द चार्ज और हाउ फास्ट दे आर मूविंग ऑन द इलेक्ट्रोफोरेसिस। कितनी फास्ट उन्हें मूव करेगा उसके हिसाब से आप 5 डिफरेंट सब टाइप्स को फॉलो करें, मालूम करें। And thank God you have not given a name and they have just put the number on that and they have said that there is already LDH1, LDH2, LDH3, LDH4, LDH5. कैसा डिवाइड करें आप इलेक्ट्रोफोरेसिस के जरिए? हाउ मच फास्ट दे आर मूविंग डिपेंडिंग ऑन द चार्ज। कितने फास्ट जा रहा है उसके हिसाब से आप LDH1 से लेकर LDH5 तक क्लास। ठीक है? इजी। Now, what is the role of the LDH enzyme? It is the role that it is going to convert the pyruvate into the lactate. In the presence of LDH.
enzyme, and these reaction is reversible. And the two arrows have been given to you, that is the reaction is reversible. Okay, RBC के अंदर कोशिश साइड का एनर्जी है बेटा, RBC में ग्लाइकोलाइसिस अगर हो रहा, RBC is the cell which is responsible for giving the oxygen to all part of your body, but RBC is also a cell from where it is getting the energy. Lactate. From the lactate they are going to get the energy. From the lactate से जिंदा रहते हैं. RBC एक ऐसा सेल है जो पूरी जिस्म को आपको ऑक्सीजन देता, लेकिन RBC भी एक सेल है ना, उन्हें कहाँ से लेना फिर ऑक्सीजन? लैक्टेट के जरिए. ठीक है, लैक्टेट के जरिए जिंदा है. ये बेसिक क्वेश्चन, वेरी बेसिक क्वेश्चन. ठीक है, RBC is very loyal. He will take the oxygen from the lungs and give every part of your body, the cells with wherever the requirement, they'll give the oxygen to the every single part of your body. But RBC won't take any kind of oxygen in between. It's very loyal. Whatever the oxygen they will take, it will deliver to the cell, but they won't utilize in between. But RBC also need energy for the survival. That means that they will move toward the anaerobic cycle of the glycolysis, where they will take the energies. ठीक है, RBC खुद को जिंदा रहने के वास्ते भी एनर्जी होना पड़ता है उसको, तो उन्हें कहाँ से ले रहा? लैक्टेट के जरिए. ठीक है, लैक्टेट के जरिए आप बना सकते. तो डिपेंडिंग ऑन द इलेक्ट्रोफोरेसिस पैटर्न, you have divided the LDH into 5 different subtypes depending on their mobility, how they pass their movements, as well as they have given the subunits. That is H4. Now here H is standing for the heart and M is standing for muscle. H is standing for the heart and M is standing for the muscle, and depending on the mobility you have divided, as well as they are going to have some subunits. Okay, now the LDH pen is going to have all the subunits, which is going to represent the heart. Okay, थोड़ा ऐसे चलिए आगे समझ में आएगा, मुझे मालूम है कंफ्यूजन, थोड़ा ऐसे चलिए. ठीक है, now LDH2 it is the H3M. That means that they are going to having the unit, and 3 units will be having the H type of molecule, and 1 unit will be going to have N type of molecule. Now in LDH3 they are going to having the H2M2. These are the subunits which has been made up of. LDH किसका बना हुआ है? H4 molecule. LDH2 किससे बना हुआ है? H3M molecule. आपको आगे समझ में आता है ऐसा क्यों होगा? Why it is like that? Now H2M2. That means that they are going to have 2 H type of molecule and 2. Now this one is going to have the HM3. That means that they are going to have only H1 type of molecule and 3. This one has been made up of M4. All the molecule which has been made up of, it is made up of M type of subunit. Okay? Now you have been seen that these are the tetrameric molecule. Tetrameric molecule. 4 subunits, they are getting joined together to form one type of molecule. Okay? Now LDH1 and LDH2. LDH1 and LDH2 will going to present in the heart and RBC. It is also going to present in the heart and RBC. आप ऐसे चलिए, ठीक है. अभी आपके दिल में क्वेश्चन आ सकता है, जब H is representing heart, why the RBC? आराम से समझो, थोड़ा ऐसे चलो, आप समझना, ठीक है. Now LDH1 and LDH2 is going to have to present in the heart and the RBC. Heart and the RBC. LDH1 और LDH2 किसमें प्रेजेंट रहता? Heart and RBC. ठीक है. Now LDH3 is going to present in the brain and kidney. Brain
Now LDH4 and the 5 they are going to present in the liver and skeletal muscle. Liver and skeletal muscle. पहले अपन LDH डिवाइड करें इलेक्ट्रोफोरेटिक पैटर्न पे, फिर डिवाइड करें बेस्ड ऑन द सबयूनिट्स, फिर डिवाइड करें बेस्ड ऑन द लोकेशन. ठीक है? Okay. Now, in the electrophoretic pattern, this LDH1 will going to have the fastest moving, and LDH2 will be the faster, and LDH3 will be the fast, slow, and the slowest. That means that LDH1 it is the fastest molecule to migrate in the electrophoretic channel. And this LDH5 will going to have the slowest in the electrophoretic channel. ठीक है? Electrophoretic. Now, their percentage of distribution. How much they are going to get distributed? They will be having 25% in normal circumstances, 35%, 27. 8 what's the English? 25 35 27 8 5. ठीक है? The percentage present in the plasma or cell. Their percentage present in the plasma and the cell. Okay. Now you have seen that the LDH2 it is higher than the LDH1 in the normal circumstances. In the normal circumstances. Now LDH1 it is lower than LDH2 in normal, but in cases of MI LDH2 become higher than LDH1. In case of MI, if I am talking about MI, I am talking about the myocardial infarction. Generally, आपकी बॉडी के अंदर LDH2 will be having the more in the concentration और LDH1 will be having the less. देखिए आप ये 25% में है, ये 35% में है. ठीक है? It is better. Now, what is going to get happen in the myocardial infarction? These LDH2 concentration will become more and LDH1 concentration will become less. Point 1. Point 2. You should be always be remembering that LDH2 becomes higher than LDH1. Sorry. Already LDH1 will become higher than the LDH2. You should be remembering this thing that every cell, whatever the cell is present inside your body, will undergoing the metabolic process. Every cell, जो भी cell आपकी body के अंदर है, वो metabolism के अंदर जा रहा है. That means that in every cell, the glycolysis is taking place. ठीक है? So in every cell, if the glycolysis is going to get present, that means that the LDH enzyme is also going to get present. लिवर के LDH एंजाइम्स अलग है. लिवर में कौन सा एंजाइम है? LDH4 एंड LDH1. हार्ट में कौन सा है? LDH1 एंड LDH2. ठीक है? ब्रेन एंड किडनी में कौन सा है? LDH3. इसका मतलब ये है might be they are having the different positions, but they might be they are having different subunits, but they will catalyze same type of reaction.
में बात आपको आई, ठीक है। They are present in different positions. Some are present in the heart, some are present in the brain, some are present in the kidney. Depending on presence अपन different नाम दिए, लेकिन उनका सेम टाइप का रिएक्शन करते हैं बेटा, पायरुवेट कन्वर्ट करते लैक्टेट। अब मैं बात आपको ऐसे समझाऊंगी। पॉइंट 1, पॉइंट 2 आप बोर्ड पे लिखिए, कोई भी सेल रहो, हार्ट भी एक सेल से बना हुआ है, किडनी भी एक सेल से बना हुआ है, लिवर भी सेल से बना हुआ है, ब्रेन भी सेल से बना हुआ है। So these LDH will be going to present inside the cell in the intracellularly. They are not going to present in the extracellular. They will present in the intracellular. चाहे वो ब्रेन रहो, चाहे वो हार्ट रहो, चाहे वो किडनी रहो, चाहे वो लंग्स रहो. It can be anything, but they will present inside the cell, not the outside the cell. Not the outside the cell. For an example, you have said that LDH1 will become more in the concentration than compared to the LDH2 in cases of myocardial infarction. What is going to get happen, you know, whenever the cell become moving towards to the dying stage, cell मर जा रहा है या फिर cell ऐसी position पे आ गया, बस्ट हो गया, what is going to get happen? The LDH is present abundantly in the intracellular environment. It is not present in the extravascular compartment. Intracellular. What is going to get happen? These LDH will start getting leak out from the cell. आपको बात नहीं समझ में आई, मैं क्या बोल रहा हूँ? LDH1 किस में रहता? मोस्टली इन द हार्ट एंड द लिवर, हार्ट एंड द गार्डिस। क्या बोलना चाह रहा हूँ? एक हार्ट का सेल लिए आप, हार्ट का सेल लिए, इसको देख रहे हैं अपन, क्या हो जाता? जब कभी भी सेल आपका मर जाता, जब कभी भी सेल मर जाता तो क्या होता? सबसे पहले कौन निकल जाता सेल में से? LDH। तो LDH will be acting as a key diagnosis. अगर LDH1 लो concentration में था, अगर LDH1 हाई concentration में आ गया तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा? That means your heart is getting failure. Your heart cells is becoming rupture. हार्ट मरने की तरफ जा रहा है आपका, जिसकी वजह से क्या हो रहा? You have having the leakage. अगर LDH बाहर निकल गया तो मेटाबॉलिक शटडाउन हो जाता, ठीक है। Why every cell need to have the LDH? Because in certain condition, sometimes your body also need anaerobically metabolism. हर वक्त एरोबिक मेटाबॉलिज्म चलना जरूरी नहीं है, थोड़े बॉडी पार्ट्स में आपके एनारोबिक मेटाबॉलिज्म भी होते, ठीक है। सडन हाइपोक्सिया हो तो इमीडिएट मरते आप? नहीं मरते, you will wait certain time. So till that to manage situation, every cell need to have life. वो कौन मैनेज करेगा? LDH. That's the reason LDH will be present abundantly inside your cell, intracellular compartment. But once your heart, especially in cases of heart in myocardial infarction, LDH1 अगर आपका लीक होकर सीरम में आना शुरू हो गया, you have seen the LDH1 किस में प्रेजेंट है? For an example, LDH1 किस में प्रेजेंट है बेटा? हार्ट में प्रेजेंट है LDH1. इन्हें हार्ट में रहना, सीरम में नहीं रहना, सीरम में रहना. If you are seeing that LDH1 concentration has been got rise in the serum, that means that यहाँ पे leakage हुआ. That's the reason LDH1 has gone into the serum. समझ में बात? So if LDH1 will be present in the higher concentration in the serum, it is representing the MI, myocardial infarction. जो चीज हार्ट में रहने की है, उन्हें अगर सीरम में ज्यादा कंसंट्रेशन में देखने को मिल गई तो लीकेज हो गया. दैट मींस योर हार्ट इज डाइंग. समझ में आई बात आपको? इट इज वेरी इजी कॉन्सेप्ट. मैं आपको ये समझाने के लिए ऐसा बोल रहा हूँ, आप बुकिश वर्ड्स देखना, ठीक है? नहीं, फर्स्ट ईयर में क्या है बच्चों के एग्जाम्पल है, फिर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन सर ने आप जो पढ़ा है वही सीखता हूँ पढ़ा. तो इसलिए बोला कि आपको समझाने के लिए ऐसे स्टोरीज बनाता हूँ मैं, ठीक है? समझ में जब आ जाता है एक LDH1 वाला एंजाइम है, हार्ट में चलेगा, वो भी इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट में. It should not move to the extracellular compartment. If it is rushing towards the extracellular compartment, that means that the leakage has been happened, the damage has been done. That's the reason the elevation of it. समझ में आई बात? In the same way, LDH5 will be acting as a key diagnosis for the liver diseases.
whereas LDH1 will be having the key diagnosis of myocardial infarction स्पेशल एक्सेप्शन है जी इसमें, ठीक है, इसीलिए उसको हार्ट एंड आरबीसी लगा है, एक्सेप्शन है. सो LDH1 will be acting as a key diagnosis. अगर किसी भी पेशेंट में LDH1 has been seen in the higher concentration, that means they are suffering from the myocardial infarction. That means that their heart muscles has been got under the damage. That's the reason the LDH has leaked out. Okay. Now LDH5, it is present in the abundantly in the liver. If they have been seen the elevated level, normally the 5% is there. If it is more than 20%, then it is representing the hepatitis or hepatic failure. Hepatitis or hepatic failure. बात समझ में आई बात आपको? Point 1. Point 2, LDH1 and 2, they are generally LDH1 will be more specifically present in the heart. Exceptions are there. That's the reason you have been given the RBC2. Exceptions are there. Exception दूसरा चीज क्या है? LDH2 will also going to present in the RBC. RBC will lactate चाहिए, उन्हें तो lactate पे dependent है. तो इसका मतलब ये है, whenever you are performing the test inside your laboratory, if the sample has gone under the hemolysis, you can get a false result of LDH. Yes. अगर आपके पास एक सैंपल आया और डॉक्टर बोला आपको परफॉर्म करिए LDH टेस्ट, might be they are suffering from the हर चेस्ट पेन को कार्डियक सिम्टम डिटेक्ट करते हैं अपने पास, वो से भी इमरजेंसी लेबोरेटरी इमरजेंसी वार्ड्स में चले जाओ, कैजुअलिटीज में चले जाओ. जब कभी भी चेस्ट पेन हुआ, इट माइट बी ड्यू टू द गैस और व्हाट, बट दे विल फर्स्ट थिंग दे विल टेक दैट थिंग एज अ MI. ठीक है, बिकॉज चांस नहीं ले सकते आप. MI अगर आप अर्ली डिटेक्ट करें तो उतना जल्दी अच्छा हो सकता है ट्रीटमेंट के लिए, जितना लेट डिटेक्ट करें तो मुश्किल हो जाता है. हार्ट सेल्स अगर आपके डैमेज होना शुरू हो गए तो मुश्किल हो जाता. तो इसके लिए जब कभी भी चेस्ट पेन होगा तो फर्स्ट थिंग दे विल चेक दैट इट माइट बी MI. सो जब कभी भी आपके पास सैंपल आया MI LDH के, might be they are not suffering from the MI. The reason of the heart pain might be something else. He might be having a broken heart. ठीक है, the reason might be differ. Okay, so now point 1, they are not having the MI. That means that the LDH1 level is not going to get rise, but due to the sample correction or high centrifugation or might be in any other fact, the sample has got hemolysis. What is going to get happen? RBC will also going to have LDH. They might be not suffering from the myocardial infarction, but RBC में भी LDH है ना जी. So these RBC will go into hemolysis में होता है क्या? Rupture होता, release होता. So these RBC LDH, if it is getting mixed up into the serum, there might be chances of getting false result. और आपकी एक गलती की वजह से बेचारे को कार्डियक ट्रीटमेंट जाता है. ठीक है. So whenever you are receiving the LDH sample, should not be hemolyzed. Otherwise, you are going to get the false positive result. False positive. Because RBC is also intact. हाँ. लेकिन इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे तो भी आपको false result नहीं आता. ऑल्टरनेटली वो रप्चर होके मिल गया. ठीक है. पॉइंट 1. पॉइंट 2 बेटा, पॉइंट 2 ये समझने वाला है. अगर LDH1 नहीं है, LDH2 अगर हायर कॉन्सेंट्रेशन में है, LDH2 अगर हायर कॉन्सेंट्रेशन में है and he is not suffering from the MI, आप कैसे कंफर्म करोगे? LDH2 हायर कॉन्सेंट्रेशन में है, not LDH1. LDH1 specifically for the cardiac MI. ठीक है. Now LDH2 it is in the higher concentration. LDH2 टेस्ट है, मैं सिंपल लगा हूं, सिंपल बोलूंगा. पहले अपन बोले LDH1 किसमें concentration हाई हो जाता? myocardial infarction MI. अब मैं क्या बोल रहा हूं? What I am saying, LDH2 it is in the higher concentration, might be due to the heart attack हो सकता, but is not having any kind of symptom. ECG and everything is normal. Now how you will confirm it is not related to the heart, it is related to the RBC.
by seeing other thing, by seeing bilirubin levels. Yes. अब आप देखिए बेटा, नॉर्मली जब कभी भी हम प्रीवियसली भी पढ़े, if the RBC will going to break down, they will going to form the bilirubin. Yes, and produce bilirubin बनता. RBC जब कभी भी आपका hemolysis में गया, if it is going under the hemolysis, then it is going to end product going to form the bilirubin. Point one. If LDH2 levels are high, along with the bilirubin levels are also high, then these LDH2 has been high due to the intravascular hemolysis. समझ में आई बात? You should always be correlated. एक चीज पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते, बिकॉज यहाँ पे दो चीजें मिलके आ गए, तो आपको मालूम कैसे होगा ये हार्ट की वजह से हो रहा या फिर रेड ब्लड सेल की वजह से हो रहा? हाउ विल चेक? You will going to key diagnosis for that is the if the hemolysis is going to get happen, अगर hemolysis हुआ, the end product bilirubin need to get formed. Whether it will be direct, indirect, that will be later on. Bilirubin should be there. If elevation level of the bilirubin is there, as well as elevation level of the LDH2 it is there, then it is representing the intravascular hemolysis. Now it is related to the your blood cells, not the heart. ये हार्ट की बीमारी नहीं होती, ये होती समझ रहे हैं बात आपको? वेरी ट्राई टू मेक वेरी समझ में आई बात? यस कर सकते हाई आ गया अगर बिल्कुल लो है तो यू शुड ऑलवेज बी गोइंग टू द एक स्पेसिफिक टेस्ट पे आप ट्रीटमेंट नहीं शुरू कर देगा, यू गो फॉर द कीलर. ठीक है, ये अपने लिए भी एक लैब के रिजल्ट को मोर रिलायबल बनाने के लिए भी जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट. सिर्फ LDH1 वाला आगे टेस्ट आ गया, यू हैव सीन द हाई लेवल, डोंट रश फॉर द रिजल्ट्स, यू चेक फॉर द अदर थिंग्स आल्सो, अदर सिम्पटम्स जरूरी है. ठीक हो गई बात? सो LDH1 इट इज स्पेसिफिकली फॉर MI, LDH2 it is both for heart and RBC2. You need to go for other tests to check out, to rule out the correct way. ठीक हो गई बात? LDH5 specifically for the liver, specifically for elevation level of the LDH5. If more than 20%, then it is due to the liver. ठीक है? Now one more isoenzyme it is there, that will be a CPK, creatinine phosphokinase. Creatinine phosphokinase. Yes, creatinine phosphokinase. ये कहाँ देखे आप? Creatinine phosphokinase. Where you have seen the creatinine phosphokinase? कहाँ देखे आप? Creatinine phosphokinase कौन सी साइकिल में देखा? Synthesis of creatinine में देखे आप? Synthesis of creatinine में phosphocreatinine is going to convert into creatinine in the presence of creatinine phosphokinase. जब आपका क्रिएटिनिन बनते रहता क्रिएटिनिन के टाइम पे आप ये चीज देखे रहे क्रिएटिनिन फॉस्फोकाइनेज वेरी इंपॉर्टेंट है. नाउ क्रिएटिनिन फॉस्फोकाइनेज आल्सो हैज बीन डिवाइडेड इनटू सब डिफरेंट टाइप, three सब डिफरेंट MM yes CPK1 CPK2 CPK3 मसल ब्रेन. अच्छा ये आपको ऐसे बार बार बोल रहा हूँ, इन लोग डिफरेंट पोजीशन पे रहे, इन लोग के डिफरेंट स्ट्रक्चर रहे, सब एक ही टाइप का रिएक्शन देंगे, दैट मींस phosphocreatinine will convert into okay. Now depending on their presence in the different area, they have divided into different categories, and they have unit a subunit division, that is an BB, that is stand for brain. MB it stand for heart, and MM stands for muscle. MM stand for muscle, skeletal muscle, skeletal muscle. ठीक है? Now अगर आप LDH1 में भी देखेंगे तो LDH1 will be acting as a
cardiac marker, isn't it? Yes. Cardiac marker. In the same way, CPK2-MB, elevation of the CPK2-MB, it is also a early diagnosis of MI. Point 1, early diagnosis of MI. Or it is the first enzyme to get elevated in MI. It is the first enzyme to get elevated in MI. ये पहला एंजाइम है जो हार्ट अटैक आते सबसे पहले जो एंजाइम बढ़ता वो CPK2-MB, ठीक है? CPK2 या फिर CK, क्रिएटिनिन काइनेज, क्रिएटिनिन फॉस्फोकाइनेज और CK, क्रिएटिनिन, ठीक है? So now the CPK2 is going to have the early first enzyme, पहला एंजाइम जो एलिवेटेड होगा मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन में कौन सा बेटा? CPK2, ठीक है? Now the CPK1 will going to representing your brain health and this will going to present your skeletal health. The first and very key diagnosis for a myocardial infarction is the CPK2-MB. Is that? Heart. Now, in the same way, isoenzyme alkaline phosphatase is also there. Alkaline phosphatase. Isoenzyme alkaline phosphatase. Yes, alkaline phosphatase. And these alkaline phosphatases having the 6 isoenzymes. LDH के कितने हैं? 5. CPK के कितने हैं? 3. ALP के हैं? 6. Alkaline phosphatases. Now these alkaline phosphatases are divided into 6 different, that is alpha ALP, alpha 2 wheat labile, alpha 2 then wheat stable, 3 beta ALP, and gamma. Now out of this the most important is the alpha 2 wheat labile. Out of this alpha 2 wheat labile, they are mostly present in this is going to get elevated in the hepatitis. दूसरों की उतने इंपॉर्टेंस बुक में नहीं दिया हुआ है इसलिए मैं उसको एलांगेट नहीं कर रहा। alpha 2 wheat labile is going to get seen elevated in the hepatitis. alpha 2 अदर्स के लोगों का बुक्स में नहीं दिया इसलिए मैं लेक्चर को नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? आपने बुक्स में नहीं है। So this ALP can also be an enzyme, isoenzyme. We have divided into 6 different categories. Alpha 1 ALP, alpha 2 wheat labile, alpha 2 wheat stable, ठीक है? 3 beta gamma. So out of that alpha 2 will be the key marker for the hepatitis. Okay. The last thing we'll discuss about the enzymes in the MI, then we'll wind up. 1 2 3 4 5 6 Gamma group नहीं है CCT. No. Alpha 2 enzymes in AI. MI, myocardial infarctions. शायद एक छूट गया, ठीक है? Enzyme in MI. Enzyme in enzyme. Enzymes, how they are going to react in cases of myocardial infarction. What is the first enzyme to get elevated? Yes, बोलिए अक्षर. First enzyme क्या है? CPK2. कौन सा CPK और क्या बोलेंगे उसे? MB. CPK-MB. It is the first enzyme to get early. First enzyme
first enzyme to get elevated. ठीक है? Now this is going to get elevated after 6 to 18 hours after MI. 6 to 18 hours after MI, and they will going to reach the peak 24 to 30 hours and going to become normal in 2 to 3 days. First enzyme which is going to get elevated in myocardial infarction, they are going to get seen, the concentration going to get seen after 16 to 18 hours after the MI. They are going to see peak levels in cases of 24 to 40 to 30 hours, and they will become normal after 2 to 3 days. After the arrest, they will go. After the arrest, myocardial infarction होने के बाद 6 घंटे के बाद ये will able to see the CPK in the higher position. उससे पहले के डायग्नोसिस बताता हूँ। उससे पहले तो मरता था? नहीं मरता है, ये मैं दूसरे डायग्नोसिस बताता हूँ। ठीक है, लेक्चर का कंप्लीट होता है, आपको ऐसे चलना। ठीक है, ऐसे चलो आप। साथ साथ 6 घंटे से पहले कैट क्वेश्चन है, मरता था, लेकिन एमआरएन नहीं लेगा। ठीक है, सो द सीपीके नॉट व्हाट ठीक है, आप पूछ रहे हैं अगर सर 6 घंटे से पहले अगर नया डायग्नोसिस हुआ तो सर मरता था, लेकिन नहीं मरने देते हैं। CPK, the first enzyme to get elevated, they are going to get elevated from 16 to 18 hours after the myocardial infarction, and the peak you will able to see after 24 to 30 hours, and they will become normal after 2 to 3 days. The next enzyme which is going to get act as a very key diagnosis. No, it is a AST. AST, also known as SGO2. मैं बारह बोला है, so many times I have said to you what is the role of SGOT. ALT, SGBT. Solo SGOT, heart disease है. Combination with SGPT, liver disease. Exceptions रहते हैं मेरे बच्चों. ठीक है, ऐसा फक्त को लिखना नहीं बोल रहा है, एक्सेप्शन रहते हैं, आपको समझ में आने के लिए। ठीक है, तो then next enzyme which is going to get elevated is the AST. AST also known as yes. Now they are going to rise soon after the CPK. After CPK, that is after CPK, and peak you will able to see after 48 hours, and they will become normal in 4 to 5 days. एक जना आया, मैं 3 दिन पहले बहुत सीने में दर्द था, ठीक है, अब जरा नॉर्मल दिखा। अच्छा, सीने में अगर if you are getting a chest pain and it is migrating to your left hand, then only it is the diagnosis for MI. Most of the cases exception है, ठीक है। If it is the chest pain, if it is migrating to the left hand and the patient is normal in the appearance, ठीक है, then you can suspect that. If it is not migrating to the left hand, the patient is normal in the appearance, then it might be the other cause. But a normal in the appearance is migrating to the left hand and reaching the middle fingertip pain. ये key diagnosis, ठीक है। If it is chest pain, migrating to the left hand and reaching to the middle fingertip, pain is unbearable, then it is due to the दूसरी चीजें हैं, sweating होना, you feel escaping, बहुत सारे pressure, blood pressure is also very good. Now the SGOT, सोना 3 दिन के बाद अगर आया, मैं 3 दिन पहले मैं दबा के दर्द हुआ था मेरे को, लेकिन क्या बोलते हैं, नहीं आ सका मैं हॉस्पिटल, वो नहीं विलेज में था, नहीं तो दिखा तब आप CPK NP अगर कराए तो फायदा नहीं है, because it has become normal. What the other test you need to do? अगर 2-3 दिन के बाद आ रहा तो आप कौन सा टेस्ट कराएंगे? अगर SGOT लेवल से बहुत बढ़ के आ रहे हैं, 3 दिन पहले अटैक आते मरते नहीं चाहिए, ठीक है, मरे तो मर भी सकते हैं, माइंड भी वही माइंड वाला होगा ना। थर्ड एंजाइम माइंड वाला इट इज द NDH, वही भैया भी lactate dehydrogenase. It is a very lately elevated enzyme. Lately elevated.
enzyme, it is going to rise. You will see the rise again the second day, and they are going to become peak. एक तो माइनर 3 आया to 4 था days. बहुत पेन 3 to 4 days, and become normal after 10 to 15 days. after 10 they can't break now. Not. Second, so slowly इन्हें आता, but they remain for longer period of time. Slowly they get elevated and remain for longer period of time. So first enzyme to get elevated is CPKMB. Second enzyme soon after CPKMB, SGOT. After that, LDH. Okay. Now, the question still remains. 6 to 18 hours is 6 hours is there are certain other non-enzymatic cardiac markers are also there. You should be right. Non-enzymatic cardiac markers. Non-enzymatic cardiac markers. ये पूरे enzymatic क्या नाम बेटा? CPKMB, SGOT, LDH. तीनों भी enzymes है. But there are certain non-enzymatic cardiac markers are also there. conjugated नॉन एंजाइम ये ऐसे चीजें हैं जो एंजाइम नहीं है लेकिन ये लोग कार्डियक मार्कर के जैसा यूज करते हैं. ठीक है, नॉन एंजाइमेटिक कार्डियक मार्कर. अपन एंजाइम्स का बोला तो नॉन एंजाइमेटिक कार्डियक मार्कर्स. ठीक है, ऐसे एंजाइम्स जो कार्डियक मार्कर्स, एंजाइम्स ऐसे प्रोडक्ट्स जो एंजाइम नहीं है लेकिन इट विल बी एक्टिंग एज अ कार्डियक मार्कर. दैट इज अ troponin I. Troponin I. I is standing for the inhibitor. Generally, you are going to inhibit the actomycin. Troponin I. Troponin I. Troponin I, it is a very early इतना बना रहा उनका इंफ्रैक्शन इतना 32 बना you get the elevated level of the troponin I. लेकिन ये एक एंजाइम नहीं है. It is not the enzyme. It is a product which is going to present inside. The substance which is going to present inside your body. It is not the enzyme. But as soon after the myocardial infarction, you are able to see the troponin I. अगर troponin I पॉजिटिव आ रहा तो अभी इसको जस्ट हटा दें. CPK MB से भी पहले CPK MB 6 to 8 hours है, 6 to 18 hours है. ये less than 30 minutes समझो. ठीक है, troponin I. Now one more other name is also there, troponin T. Troponin T. Tropomyosin. T is standing for the tropomyosin. Now, it will nearly, it is going to get seen the elevation level of the trop T in cases of after 4 hours. After 4 hours. ठीक है, ये after 30 minutes में देखने को मिलेगा आपको, but in cases of trop T you will be able to see them after 4 hours. ठीक है, troponin T. जी Troponin T. Apart from there, troponin T से भी पहले, I से भी पहले, जो एक स्टैट सैंपल माना जाता बायोकेमिस्ट्री लैबोरेटरी. व्हाट इज द स्टैट सैंपल? सेक्वेंसी सैंपल. स्टैट सैंपल अगर आपके पास आया तो पूरे सैंपल आप इंडिया में ले लेना पड़ेगा. स्टैट सैंपल वेरी इंपॉर्टेंट. स्टैट सैंपल कौन से सैंपल को बोलेंगे वेंकटेश? urgent Emergency sample. If you are processing other samples, you should stop that processing. You should first move to the stat sample. And every laboratory will going to have the turnaround time, TAT time. Turnaround time. बाज़ जगह 1 hour रहता, बाज़ जगह 1 hour रहता. That means that troponin I भी आपके laboratory में आ गया. Depending on the workload and depending on the technicians which are available. अगर टर्न अराउंड टाइम आपके पास है
ER से सैंपल आया, इमरजेंसी रूम से आपको सैंपल आया, ट्रोपोनिन आई, पूरा सैंपल किससे फोन नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, बिकॉज एवरी हॉस्पिटल, अच्छे हॉस्पिटल, यहाँ पर प्लीज, अच्छे हॉस्पिटल will going to have the turnaround time. Turnaround time means in between the turnaround time, nobody, no doctor, no superintendent, nobody can call to you and ask for the reports. ये rule है, it is a rule. After sending the sample, receive the sample करते हैं आप, उसके बाद आप टाइम निकाल लेते हैं. Turnaround time is 1 hour. उसके between में कोई भी आपको डिस्टर्ब नहीं करता. लेकिन आप 1 hour के अंदर रिपोर्ट नहीं रिलीव करें, दूसरे दिन फिर मेमो इशू होगा. इंपॉर्टेंस है, स्टार्ट सैंपल्स की बहुत इंपॉर्टेंट है. स्टार्ट सैंपल्स आर वेरी इमरजेंसी सैंपल्स एज वेल एज दे आर गोइंग टू हैविंग टर्न अराउंड टाइम. अगर आप टर्न अराउंड टाइम को ओबे करना ही करना है, टर्न अराउंड साइड से आपको पहले पूछते ही नहीं, कोई कितनी भी इमरजेंसी नहीं पूछता है, दे विल मूव टुवर्ड्स द अदर ट्रीटमेंट, दे वोंट आस्क एनीथिंग इन बिटवीन. They can request you, but they can't demand. In between turnaround. After turnaround time, they can kick you. ठीक है? So every hospital will going to have the turnaround time. Depending on the turnaround time, will going to issue the report. Back to our lecture. That means that troponin T is going to get rises after the 4 hours. But before that also, in that start sample, sometimes they will going to get a BNP. BNP, that is rare natriuretic peptide. Rare natriuretic peptide. Also the pro-BNP. Both start sample. ठीक है? Pro-BNP. या फिर और एक भी है, that is ANP. Arterial natriuretic peptide. बेटा ABNP और ANP ये नॉन एंजाइमेटिक बायोमार्कर्स है. नॉन एंजाइमेटिक बायोमार्कर BNP and A, they going to get C in the elevation in case of cognitive congestive cardiac failure. Congestive cardiac failure and myocardial infarction में डिफरेंस है. Myocardial infarction में heart will going to stop working. ठीक है? In congestive cardiac failure में heart is unable to pump the blood properly. ठीक है? Pro-BNP, ABNP ये both start samples. अगर आप एक बायोकेमिस्ट्री लेबोरेटरी में वर्क कर रहे, this is a very start sample. Pro-BNP और ABNP और troponin INT में क्या फर्क है बेटा? बोलो, बोलिए. नहीं, ये तो है, ये एंजाइमेटिक का है, ये भी नॉन एंजाइमेटिक है. बट ये जो चीजें हैं, ये लोग किसके डिटेक्ट करेंगे? मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन मतलब काम करना ही बंद कर देता है. Pro-BNP and ABNP क्या करते हैं? What is the role? Rajashekar, cognitive congestive cardiac failure. That means that they are unable to pump out the blood. ठीक है? तो आज के लेक्चर में हम आइसो एंजाइम्स देखे, डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स देखे, डिपेंडिंग ऑन द प्रेजेंस देखे, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस देखे, एंजाइमेटिक पैटर्न इन केसेस ऑफ एमआई देखे, एज वेल एज नॉन एंजाइमेटिक बायोमार्कर कार्डियक मार्कर. ठीक है? ट्रोपोनिन आई क्या है, ट्रोपोनिन टी क्या है, प्रो-बीएनपी, बीएनपी, एएनपी, स्टार्ट सैंपल्स कैसा प्रोसेस करेंगे आप, हेमोलिसिस हो गया तो कौन से एलिवेशंस देखने को मिलते हैं, which LDH is going to elevate in what type of diseases, CPK MP का इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है? एंजाइम्स का चैप्टर आज माइंडर हुआ. कल से अपन QC पे फॉलो करेंगे. ठीक है? इफ एनीथिंग इज डाउट मैं 5 मिनट बैठ रहा हूँ, पूछिए.